Okay. Previous week we saw the boundary conditions for electric field on a metal surface or a conductor and dielectric boundary. Okay. We saw the boundary conditions for electrostatics at conductor and dielectric boundary surface, right? Then in last lecture, we saw the boundary conditions at the interface or the boundary between two dielectrics. Say one of the dielectric was air, okay? Say this one is air, and this is say uh, glass, okay? So what will happen if electric field hits or if the electric field wants to strike the uh, boundary between two dielectrics? Okay, say this is uh, wood. Okay, say this is wood. So we saw last time that the tangential component is not going to change. So when the horizontal component of the electric field, which is going like this in upward direction, okay, strikes the boundary, it will simply penetrate through. It will simply penetrate through uh, the structure. Its value is not going to change. The horizontal component of the electric field, when it hits the boundary, it will stay the same. So we call this as continuous. Okay. So E tangential is continuous. E tangential is continuous at interface between two dielectrics. By continuous, we means the tangential component of the electric field is not going to change. Okay. So say, if we say this is E tangential 1 and say this is E tangential 2, this one, and say this is E tangential 3. All the three E tangential 1 is equal to E tangential 2 equal to E tangential 3, which means that the electric field is not going to change. Okay. Is this okay? Any question? If it's remember, um, if it is a perfect dielectric, remember if it is perfect dielectric, or it, which means it has zero free electrons. It also means, if say this is some dielectric, for example, this is some dielectric material. When the electric field strikes this, okay, this electric field will have two components. One is this horizontal component, the other one is this vertical component. Okay. Similarly, this horizontal component, this tangential, and this vertical. Okay. So the tangential component at every point is same. It's not going to change. Okay. The tangential component of this is not going to change. See if this one is striking it like this way, this will be the horizontal and this one will be the vertical. E tangential and this one is E normal. The direction really doesn't matter. Maybe you take this direction. Really just doesn't matter. Okay.
really just doesn't matter. Okay, so this is how the electric field is not going to change. Or if I say another situation, say this is the structure, the electric field, the tangential component of the electric field here is same as the tangential component of the electric field is here. So this is ET1, this is ET2. It's not going to change. And even the electric field here, the tangential component is here. If this is very symmetric, this is very symmetric. Okay, the tangential component, this one and this one, say this is ET1, this is ET2, they are same. ET1 is same as ET2. This means the tangential component will simply penetrate through the dielectric. It's not going to change. Okay. So that was the finding of the previous class. Now today we want to see the normal component. And again, very similar approach we will take when we were finding the normal component at the interface between a dielectric and a conductor. We took the help from the Gauss law, and very similar derivation we are going to follow. And this means that the normal component is also continuous. So if this normal component hits this one, say the norm, say I draw a different figure. For example, here, say here is some medium, say a wood, and a perfect medium. Okay, perfect dielectric. Say this is some other glass, perfect boundary. Say this is the normal component of the electric field. Okay, E normal, E normal 1. This will be very same as E normal 2. E normal 2. Okay, but however, if you talk in terms of D, if you talk in terms of D, okay, say this is if I do not talk for E, if I talk for D, then here is D, and this was D normal 1, this is D normal 2. So D normal 1 is equal to D normal 2. Okay, and if the two are not zero, if D normal 1 is not equals to D normal 2, then D normal 1 minus D normal 2 will be equals to rho s. So the two will not be equal if there are some free electrons in this structure. If there's a free electron, that will come here. So if a charge comes here, charge divided by area, charge divided by area is the, so if there's a free electron in the dielectric or at the dielectric boundary, if there's a free electron here at the dielectric boundary, then D normal 1 will not be same as D normal 2, and there will be a little drop, and that little drop in the electric field will bring charge to the interface. बात ही समझ आ रही है? अगर अगर स्ट्रक्चर में फ्री चार्ज पड़ा है तो उसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करना है और उसका अगेंस्ट मूव करेगा. ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में फ्री चार्ज पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा ना, तो बिल्कुल इस बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन को बाउंड्री तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? डी नॉर्मल 1 से मिलेगी. तो डी नॉर्मल 1 से वो एनर्जी माइनस होके डी नॉर्मल 2 दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करेगा. बात की समझ आ रही है? तो डी नॉर्मल 1 अगर फ्री चार्ज नहीं है तो डी नॉर्मल नॉर्मल कंपोनेंट भी कंटीन्यूअस है, लेकिन अगर फ्री चार्ज है तो नॉर्मल कंपोनेंट कंटीन्यूअस. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात सामने नजर आ रही है. डी नॉर्मल 2 is epsilon
naught epsilon r2 into e normal 2. Okay, and d normal 1 is epsilon naught epsilon r e normal 1. ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसमें. सपोज 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 डी नॉर्मल 1 इज इक्वल टू डी नॉर्मल 2. ये कौन सी कंडीशन है? जब डी नॉर्मल 1 और डी नॉर्मल 2 आपस में सेम होंगे तो कौन सी कंडीशन है ये? तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री कोई फ्री, चार्जेस नहीं होंगे। यस एग्जैक्टली, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री है, फ्री चार्ज नहीं है, वो मूव ही नहीं कर रहा. अच्छा, तो वुड है ना, वुड का एप्सिलॉन r1 होगा. ओके, और ग्लास का एप्सिलॉन r2 होगा. ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स है. सो डी नॉर्मल 1 क्या होगा? डी नॉर्मल 1 होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 e नॉर्मल 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 e नॉर्मल 2. ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए. तो अगर देखें, हमें पता है कि वुड और ग्लास का एप्सिलॉन r1 इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r2. इसका मतलब क्या हो गया कि E नॉर्मल 1 इज नॉट इक्वल्स टू E नॉर्मल 2. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमने कहा कि D सेम है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस नजर नहीं आ रही. इंटेंसिटी डिफरेंट है लेकिन डी क्या है? कॉन्टिन्यूस है. So little interesting result. D density is continuous. Electric flux density is continuous. Suppose, but the electric field intensity is not continuous because we have two different mediums. Okay, and energy is proportional to the intensity square. Since we have two mediums, they have different energies, storing capabilities. क्योंकि दोनों डिफरेंट मीडियम्स हैं, दोनों का एप्सिलॉन डिफरेंट है, तो उसमें एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी डिफरेंट है. ऑफ कोर्स ऐसा ही है. समझ आ रही है बात की? सो ये इसमें थोड़ा सा लास्ट से सेकंड बाउंड्री कंडीशंस थी. तो टुडे we will apply these boundary condition on some structures and we'll take the example of a capacitor. Okay, you know, a capacitor has a conductor and another conductor, and here is and the two conductors are separated by dielectric. समझ आ रही है ना? So see the charge, total charge here divided by total area is rho s here, और rho s किसके बराबर है? d के बराबर है. ठीक है. सिमिलरली ऑपोजिट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा. दिस अ पॉजिटिव चार्ज, अगेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज and suppose the same area on which the charge is residing, so वो भी d ही होगा, rho is surface charge density. And d has this equation, d is equal to epsilon r epsilon naught e. E has this direction, this is E. Okay, from positive to negative. Two plates separated by dielectric, both plates are charged, so we have capacitance. Right? How much capacitance we have? Again, we will follow a very typical way of doing things. We will find, suppose this is point B, so we'll find VB here, and we will find VA here. Okay, so VAB will be equals to how much? Integral from A to B
E dot E dot E dot dl. This is what we do. DL. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा हम इसको रिवर्स करते हैं. ये हमारा थोड़ा सा, सॉरी, फ्रॉम बी टू ए. ओके, समझ आ रही है? तो ये हमारी क्या है, वोल्टेज है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान. अगर वो चार्ज है, अगर अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है. वन इज नेगेटिव पोटेंशियल, द अदर वन इज पॉजिटिव पोटेंशियल. द डिफरेंस इज कॉल्ड एज VAB. Okay, so V is how much? This E is how much? You remember E was how much on the parallel plate? E on sheet, E on sheet of charges. E between two sheet of charges. कितना था? दो पैरेलल शीट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? Rho S divided by epsilon naught in the normal direction. You remember that? एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था अगर वो से पॉजिटिवली चार्ज है? कितना था? E was equal to Sir, rho rho S. s over 2 epsilon naught. हाँ, और जब दो प्लेट्स होंगी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो E कितना हो जाएगा? E2 खत्म हो जाएगा. E बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारा जो है ना दो प्लेट्स के अंदर कन्फाइंड होगा. सो रो S बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसका एप्सिलॉन R है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन R भी आ जाएगा. ठीक है, रिमेंबर दैट. सो रो S डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R. Right? Okay. So put the values in the equation. So E VAB E dot dl is rho S epsilon naught E, sorry, integral dl from B to A is how much? Is how much? D. D was what? D was the separation between the two plates. D. ठीक है, D किसके बराबर है? B to A dl. ओके, सो हमारे पास क्या आया है? VAB. ये क्वेश्चन आई है, अगर हम चार्ज को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा? और फ्लिप करें, चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और इक्वेशन को फ्लिप करें, तो ये हमारे पास क्या बनी है? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस की डेफिनेशन. ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस. ओके, so this is our capacitance, and capacitance really will depend on geometry, shape, and epsilon. So you will have more capacitance if epsilon R is high. Okay, the capacitance will depend on epsilon R and what capacitance will depend on the shape and geometry. Capacitance depends on A, capacitance on D. So capacitance depends on area and separation, which is geometry, and capacitance depends on epsilon R. Okay, so so that was now let's try a different thing here. Suppose we have uh, suppose we have one metallic plate. This is one conductor, and we have another metallic plate, another conductor. Okay, just for example. Okay, just for example, हम कैपेसिटर बना रहे हैं,
And between those two conductors, we have one dielectric, which is this green dielectric, epsilon R1, suppose. This is green dielectric. Okay. Green dielectric, epsilon R1, any dielectric, right? ठीक है, बात की समझ आ रही है? और हमारे पास एक वाइट डाइलेक्ट्रिक है, एप्सिलॉन R2. ओके, सपोज वाइट डाइलेक्ट्रिक. तो हमने क्या किया, हमने दो प्लेटों के दरमियान दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स रख लिए. क्या किया हमने? दो प्लेटों के दरमियान दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स रखे. बात की समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। क्या हमने क्या किया, दो मेटालिक प्लेटों के दरमियान क्या रखा है, दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स रखे. दो डिफरेंट डायलैक्ट्रिक्स। हाँ, अब देखिए अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है. ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके नेगेटिव पे एंड अप हो जाएगा. ऐसा ही है, ऐसा है या नहीं है? स्ट्रेट लाइंस. यस सर, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. तो अब हमारे पास ये क्या चीज है, ये वाली ये बाउंड्री है. क्या ये हमारे पास एक बाउंड्री नहीं है, ऑरेंज लाइन? इट्स अ बाउंड्री इंटरफेस बिटवीन ग्रीन एंड वाइट डाइलेक्ट्रिक्स. ऐसा ही है. तो ग्रीन डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉर्मल 1, और वाइट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉर्मल नॉर्मल टू। 2. ठीक है, और हमने क्या कहा कि अगर ये हमारे पास जो इंटरफेस है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस बिटवीन ग्रीन एंड वाइट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, बिटवीन ग्रीन एंड वाइट डाइलेक्ट्रिक, ऐसे ही है. बात की समझ आ रही है? तो हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डी नॉर्मल 1 इज इक्वल टू व्हाट, डी नॉर्मल 2. ये कंडीशन है ना, बाउंड्री कंडीशन. यस सर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ई नॉर्मल 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ई नॉर्मल 2. ओके, epsilon R1 is not equal to epsilon R2
2 because they are different. They're different dielectrics. So this means E normal 1 is not equal to E normal 2. ऐसा ही है. यस सर ऐसा ही. And this also means if I take the capacitance equation, if I take the capacitance equation, this one, if I take the capacitance equation, this one, capacitance depends on what? Electric field. Okay, so this also means we have now two capacitances. One in the green medium, which is C1, and the other one in the white medium, which is C2. We have two capacitances, and C2 is not equal to C1 because capacitance is a function of electric field. Since electric field is different, we have in the same structure between same two metallic plates, we have two different capacitances. Okay, two different सर J. सर ये नहीं समझ आया. नहीं आया. ओके, नो अगेन सर. दोबारा देखे. हमने क्या कहा कि सपोज हमारे पास कैपेसिटर है, ये एक मेटल है, ठीक है. ये हमारे पास क्या है? एक मेटल है, ठीक है. हमने इसको क्या क्या नाम दे दिया? कंडक्टर का. ओके, और हमने कहा कि इसी तरह का हमारे पास एक और कंडक्टर है, पैरेलल है इसके. ओके, दूसरा कंडक्टर है. जब भी दो कंडक्टर्स एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, सपोज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे है, तो हमारे पास ऊपर वाली प्लेट पे क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है. नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव. फिर हमने देखा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है. फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स रखते हैं. एक हम ग्रीन डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है. इसका एप्सिलॉन आर 2 है. और एक हम वाइट डाइलेक्ट्रिक रखते हैं. ये वाइट डाइलेक्ट्रिक एक हमने रख दिया. नजर तो ग्रे आ रहा है, डार्क ग्रे, बट लेट वी से दिस इज वाइट डाइलेक्ट्रिक. और हमने इसको एप्सिलॉन R1 कह दिया, ठीक है. हमने कहा कि उसी कैपेसिटर में बजाय एक डाइलेक्ट्रिक रखने के हमने दो डाइलेक्ट्रिक रख लिए. तो अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ग्रीन डाइलेक्ट्रिक में ये ग्रीन रहेगा और वाइट डाइलेक्ट्रिक में ये वाइट हो जाएगा. इसी तरह, अच्छा रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का कलर नहीं होता है, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक. यहाँ तक ये ग्रीन है और यहाँ तक white है. There is no color for electric field, remember, but just going to demonstrate something. और white में कौन सा? Right? Similarly, we have here the green electric field and then we have the white electric field, right? And we said the green electric field is different than the white because the epsilon R is different from the boundary conditions. This is the boundary condition.
अब समझ आ रही है बात की? एक सिचुएशन हम सेटअप कर रहे हैं, एक सिचुएशन हम बना रहे हैं, सब एक प्लॉट बना रहे हैं। अब समझ आ रही है बात की? समझ नहीं आ रही हो? तो अच्छा, हमने अभी इसको क्या कहा कि हमारे पास जब ये अगर दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो स्ट्रेंथ है ग्रीन रीजन में डिफरेंट है देन द वाइट रीजन। ग्रीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वाइट से क्या है, डिफरेंट है। ओके, ऐसे ही हमने कहा ना। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास एक कैपेसिटेंस है दोनों दोनों प्लेटों के दरमियान, दोनों प्लेटों के दरमियान जो कैपेसिटेंस है, राइट, कैपेसिटेंस सी। हमने कहा कि ये एक कैपेसिटेंस अब नहीं है, ये ग्रीन रीजन में कुछ और कैपेसिटी है एनर्जी स्टोरेज की, और ग्रे रीजन में कुछ और कैपेसिटी है एनर्जी स्टोरेज की। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. So if they have different storage capacities, this means they have different capacitances. Now, what we can do here, it look like it look like we have a green capacitance here, C2, because it has different energy storage. And it look like that we have a, a white capacitance C1 here. So an equivalent structure will look like this. Like we have a metal, we have a metal, we have a metal, and above this metal we have a green dielectric, and this green dielectric is going to give you a capacitance C2. Okay, and then we have a white region, this white region, and this one is going to give us capacitance C1. Okay, and then we have another metal here, another metal here. This gray has epsilon R1, and this green has epsilon R2. It looks like we have two capacitors now. But remember, कैपेसिटर तो तब बनेगा ना जब हमारे पास दो कंडक्टर हो। अगर C2 को हम कैपेसिटर कॉल करते तो हम हमारे पास इसका मतलब है यहाँ पे छोटा सा एक मेटल का प्लेट है। समझ आ रही है बात की? इट्स लुक लाइक ये कंडक्टर है, ये रियल कंडक्टर है, ये भी रियल कंडक्टर है, और ये ऊपर वाला भी रियल कंडक्टर है। लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ सिचुएशन बनी है कि हम ये सोच रहे कि शायद इधर भी एक कंडक्टर है, ये रियल कंडक्टर है ऊपर वाला, नीचे वाला भी रियल है, लेकिन ये जो दरमियान वाला है ना ये इमेजिनरी है, ये हकीकत में नहीं है। लेकिन ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है कि जैसे ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये नहीं।